Okay, recording started. Okay, start. Okay, so should I start? Yeah, start कर दो ये. So यहाँ पर ये जो है, this is the AutoCAD welcome screen. If you double click on the AutoCAD icon, you will get the screen. ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना. ठीक है, वो बता देंगे. हाँ ठीक है भाई. So this is the AutoCAD starting screen. And what you see here is this is the get started button. So if you want to create a new drawing, you will click on this. And this is your recent document. So if you are working on some previous projects, it appears here. Okay, so if you are working on some previous projects, it will appear. So we can just straight away click on this starter drawing. And then this is the graphics interface. This is the interface of the AutoCAD software. So AutoCAD software is by Autodesk, right? So PowerMill, PowerShape, Fusion 360, all these are from Autodesk. So it's the same company Autodesk. तो यहाँ पर इसका इंटरफेस ऐसा है कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट में you see the applications button. If you click on the applications button, these are the general options, very common options. If you want to start a new drawing, open a previous drawing, save as, import, export, and so on. Then next to this application button, you have the quick access toolbar. Okay, so the quick access toolbar has the same options as these, but you can add more options here. So if you are frequently using some commands, so for example, if you are using offset command, you are frequently using that. So you can add that button here. Just below it, you have different tabs. Okay, different tabs हैं. So we are at the home tab now. We can go to insert, annotate, parametric, view, manage, output. ये सब different tabs हैं. Tabs के नीचे इनको हम लोग ribbon area बोलते हैं. तो इसमें सारे जो commonly used tools हैं वो दिखेंगे. Ribbon area है ये. इसमें draw tool है, modify है, annotation tools है, layers, block and so on. नीचे इनको हम लोग panels बोलते हैं. If you click on these panels, you will see the more options of the same category. So if you click on draw here, you will see the spline tool and so on. Modify में अगर हम click करेंगे तो same options, multiple options of the same category. Modify करने के लिए जो tools चाहिए वो हम लोग को यहाँ मिल जाएंगे. Same goes for annotation, layers, block and so on. ये main area है. This is the drawing area. This is the graphics area. और अगर आप सबसे bottom में देखोगे यहाँ पे, तो this is the command line. So this is the most used area in the AutoCAD. उसके नीचे you will see the status bar. ये status bar दिख रहा है क्या? ये यहाँ पे जो options हैं दिख रहा है ना? तो ये जो है ये status bar है. तो इसमें grid है और भी इसके जैसे जैसे हम लोग मैं सोच रहा था कि एक example से start करेंगे तो जैसे जैसे options आते जाएंगे तो I will explain those options. अब सबसे पहले AutoCAD में we have to set up the page. If you look at this screen here, you can navigation के लिए you can just move the mouse wheel, so that will zoom in and zoom out. Or if you want to pan around, you can click the mouse wheel and then you can move around. Okay. So now at the moment, जो ये graphics area ये extend कर रहा है दोनों direction में, x और y direction में infinity के लिए. तो अगर हम लोग ऐसी graphics area में drawing start कर देंगे तो we will not get a sense of the size of the image. साइज कितना है हमारे इमेज का उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. तो फर्स्ट यू हैव टू सेट अप द पेज. इन ऑर्डर टू सेट अप द पेज यू फर्स्ट हैव टू कम टू द कमांड लाइन. सो दिस इज द कमांड लाइन. क्लिक हियर एंड टाइप द फर्स्ट कमांड व्हिच इज कॉल्ड एज units command. So if I type here UNITS and I press enter, so I'll get this dialog box. इसमें देख सकते हैं कि जो प्रिसिशन है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक प्रिसिशन रखना है वो सब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन दिस इंसर्शन स्केल. तो इफ यू क्लिक हियर यू विल सी द डिफरेंट यूनिट्स. बहुत सारे यूनिट्स हैं, किस यूनिट्स में आपको काम करना है. सो यू कैन वर्क इन एंगस्ट्रॉम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड यू कैन गो टू पारसेक व्हिच इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सो मेरे ख्याल से एक पारसेक में 19 ट्रिलियन माइल्स होते हैं. So you can choose from a variety of units. You can go from imperial to metric and so on. अभी के लिए हम लोग यहाँ पे मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे. Next command. Once we have set the units of the drawing, you can give the limits command. Limit command. LIMITS. Limits command. तो अभी मैंने जैसे बताया कि जो कैनवस है, जो ये ड्राइंग एरिया है, ये एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी के लिए.
So because it is extending to infinity, we are not getting the sense of the page. So next the command that we gave is the limits command. So limits command में आपको specify करना है कि जो bottom most limit है वो क्या है. So the bottom most limit will be 0,0. और the next command would be the topmost limit. So अगर A4 size paper की हम लोग बात करेंगे तो जो topmost limit होगी वो होगी 210, which will be the x coordinate, comma 297, which will be the y coordinate. अब ये limits command देने के बाद भी आप देखोगे कि कुछ change नहीं हुआ है, ग्राफिक्स एरिया में कुछ change नहीं हुआ है. It is because the grid is still extending till infinity. So in order to reduce the grid, what we have to do is we have to give the grid display command. GRID display. Grid display command, if you see the value is set to 3 here. Simply click and give the value of 2. आप देख रहे हो कि grid ही गायब हो गया है because we were so much zoomed out that we cannot see the grid now. So what you have to do is you have to give the zoom command. ZOOM zoom command and then all. If you see, if you click give the zoom command, it has several options to zoom. Do you want to zoom all? Do you want to zoom at the center? Do you want a dynamic zoom? Extends previous if you have a window which has to be zoomed. So you just simply click on all command. इतना करने के बाद में ये जो है ये पेज जो है अपना सेटअप हो गया है. Now you can see the A4 size sheet here. So this is the A4 size sheet here. The grid is now clearly visible. So now we are ready to start the drawing. और ये जो size of sheet है, we can set it to any size that we want. If you are, say for example, designing a poster, or if you are designing a banner or something, जिसका बहुत unusual size है, जिसका drawing size बहुत unusual, so that doesn't matter. You can simply specify the coordinates and it will set the space for you. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सीधे यहाँ पर आ जाते हैं. These are the drawing tools. So पहले पैनल में हम देखेंगे कि the first command is the line command. So if I click on the line command and if I come to this drawing space, you will see that it is asking me to specify the first point of the line. दिख रहा है ना यहाँ पे? ये डायनामिक इनपुट दिख रहा है सबको? Yes, yes. हाँ, तो ये जो है ये बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, पहला लाइन का जो है फर्स्ट पॉइंट जो है स्पेसिफाई करने के लिए. नाउ यू कैन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट आइदर बाय क्लिकिंग और यू कैन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट बाय एंटरिंग द कोऑर्डिनेट्स. सो आई विल जस्ट सिंपली क्लिक हियर. So that is the first point which has been specified. Now I can draw the line to any angle that we want or to any length that we want. एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे AutoCAD is used for very scientific drawings and it is used for the mechanical drawings, drafting, orthographic projections, manufacturing drawings के लिए ज्यादा use करते हैं. लेकिन हम लोग इसको will use it as an artistic tool. है ना, कि अगर किसी को स्कीमेटिक्स बनाना है या फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने तो फिर इस AutoCAD को कैसे यूज करेंगे, तो उस सेंस में हम लोग ज्यादा बात करेंगे. ये जो ड्राइंग पार्ट है, ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है, विल नॉट टॉक मच अबाउट दैट. एनीवेज, सो यू हैव क्लिक्ड ऑन द ड्राइंग स्पेस एंड नाउ इट इज आस्किंग यू फॉर द लेंथ ऑफ द लाइन. यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वैल्यू चेंज हो रही है, जो ब्लू में हाईलाइटेड है, इट इज आस्किंग यू फॉर द लेंथ ऑफ द लाइन. सो आई कैन सिंपली क्लिक 70, type in 70. So that is the length of the line. Now if I want to change the angle, you can see here the angle at the moment is showing as 0 degrees. I want to change the angle, so I'll simply press tab and now it wants me to enter the angle of the line. So let's give an angle of maybe 0 degrees. So now you see the first line has been drawn. Next line which is connected to this previous line, again अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है कि लाइन का लेंथ कितना है, तो हम लोग इसमें टाइप कर सकते हैं 70. और फिर लाइन का एंगल कितना है, तो एंगल अभी भी देखिए फिर चेंज हो रहा है. सो लेट्स पुट एंगल एज 90 डिग्रीज. अगेन यू कैन टाइप इन द लेंथ. व्हाट इज द लेंथ इज 70. नाउ इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द एंगल, यू हैव टू प्रेस टैब ऑन द कीबोर्ड एंड you will give a angle. Let's call the angle 180 degrees. And then you can simply close the drawing by clicking here. और यदि आपको ये line command still it is active, so I want to come out of the line command, so I'll press escape on the keyboard. So ये एक simple square बन गया. अगर हम लोग ज़्यादा dimensions के ऊपर ना जाएं और line angles के ऊपर ना जाएं, तो we can just simply draw by clicking the different areas and we can draw the line. But इसमें precision नहीं रहेगा और precision की it's not really required in artistic drawings. Anyways,
सो ये जो है ये एक प्रिसाइज 70 by 70 का ये रेक्टेंगल है. Next command is polyline command. You can use polyline and I'll show you the difference. बहुत similar command है line command जैसा ही है ये polyline. So I can draw a similar curve. So 70 tab angle would be 0. Let's call it 70 again. Angle would be 90. And then I can go 70 here. Angle would be 180. And then I'll close it up. So ये भी this is made from polyline command. इसका difference ये है कि if you click on this entity, this rectangle, you will see that everything is getting highlighted. Each of the edge is getting highlighted. लेकिन if you come here and if you click, then you will see that one entity is getting highlighted at a time. कहने का मतलब ये जो edges हैं, these are separate edges. If you draw it using line command, it has been drawn using separate edges, whereas everything is connected here. तो इसका importance ये है कि if you want to do trimming option and if you want to do trimming option such a way that it is not affecting the other parts of your drawing, so you can use the line command, and we'll discuss more about this later. Next tool that you have is a circle tool. So you can simply click on the circle, click anywhere that you want to draw the circle. So this will be the center point of the circle. You can click. And then you can extend outwards. And अगर ये बोल रहा है कि you have to specify the radius. So let's specify the radius at 10. So that is the circle tool. If you want to specify the diameter, so you can click here and you can come to this command. You can see here the command window. So now it is asking for the diameter. You can click on the diameter and I can give the diameter is 5. Oh, diameter is 5. Let's keep the diameter same as 9. So you can enter the diameter also and you can enter the radius also. Similarly, you can simply click and place here and you can draw these types of circles that you can draw. दूसरा चीज है arc. You can arc को बनाने के कई तरीके हैं. So you have lots of options to draw an arc, or depending upon what is the type of drawing that you are making. So you can select any one of these arcs. अगर हम लोग schematics वगैरह की बात करें तो what I prefer is this option, which is start, end and direction. ये बहुत common option है. So what does this? What this does is you can simply click here. You have to first specify the starting point. ये starting point specify कर दिया. You have to specify the ending point of this arc. Now you have to drag your cursor where you want the arc to go. So for example, if I want the arc to go above this rectangle, so I'll drag the cursor above. And you can specify the angle as well. So I can specify an angle of, say, for example, 45 degrees. So there you go. That made a nice arc. If you want to repeat the same command again, simply press enter on the keyboard. Click here. Click here. No, you have to click first on the arc, then click here, and then drag wherever you want the arc to be. So you can draw arcs like this. कुछ other there are some other tools as well. So for example, you have this rectangle and ellipse tool and square tool, and there is lots of tools. You can even use the spline tool if you want to draw a free-form curve like this. So you can use the spline tool also. Hello. हाँ. अब भैया SolidWorks यूज नहीं कर सकते क्या? AutoCAD में ही करना पड़ेगा. SolidWorks में एक्चुअल में जैसे इसमें कैपेबिलिटी है कि हैचिंग पैटर्न्स और अगर कलर भरना है और ग्रेडियंट्स दिखाने से मेल्ट पूल है वो दिखाना है. मैं एक पाउडर बेड फ्यूजन सोच रहा हूँ कि एक पाउडर बेड फ्यूजन का एक स्कीमेटिक बना के दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना. जैसे उसमें अगर स्कीमेटिक है तो उसको नहीं बना सकते, स्कीमेटिक वगैरह नहीं बना सकते सॉलिडवर्क्स में. सॉलिडवर्क्स में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लाइक 2D ड्राइंग बना के आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी. हाँ करेक्ट. सो और मेरे ख्याल से कलरिंग ऑप्शंस भी जो है सॉलिडवर्क्स में नहीं होंगे. लेयर्स ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे. लेयर्स ऑप्शन है ही नहीं, करेक्ट. तो वहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो इसलिए ऑटोकैड को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. खैर ये तो हो गए ड्राइंग टूल्स. एक होते हैं मॉडिफाई टूल्स. इनके बगल में जस्ट देखना तो ये पैनल है, मॉडिफाई टूल्स का ये पैनल है. इसमें कई सारे टूल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर किसमें से किसी भी टूल को इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी एंटिटी है जिसके ऊपर ये टूल इंप्लीमेंट करना है. सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू मूव दिस सर्कल, सो आई विल फर्स्ट सेलेक्ट द सर्कल. सेलेक्ट करने के लिए यू कैन सिंपली क्लिक हियर और यू कैन ड्रैग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो द सर्कल हैज बीन सेलेक्टेड. एक बार सेलेक्ट कर लिया एंटिटी
तो फिर यहाँ से टूल उठा सकते हैं, जैसे मूव टूल, यहाँ पे मूव टूल उठाया, कौन से पॉइंट से मूव करना है, इस पॉइंट से मूव करना है, कहां पे मूव करना है, इस पॉइंट पे मूव करना है, सो यू विल सी दैट द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। कॉपी टूल, कॉपी में भी सबसे पहले एंटिटी सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी में ऑप्शन आना है, क्लिक करना है, किस चीज को कॉपी करना है, इस चीज को कॉपी करना है, कहां कॉपी करना है, यहाँ कॉपी करना है, और कहां कॉपी करना है, यहाँ कॉपी करना है, मे बी यहाँ कॉपी करना है सेंटर पे। तो ये चीज आप देख रहे हो कि जो ओरिजिनल एंटिटी है ये जहां पे है वहीं रहेगी, और इसके कॉपीज जो है जहां पर आप प्लेस करना चाह रहे हो वहां पे प्लेस हो जाएंगे। ये हो गया कॉपी टूल। स्ट्रेच का जो टूल है, यहां से इंप्लीमेंट करने के बजाय the best way to stretch a line, say for example this is a line and if I want to stretch the line or lengthen the line, so करना क्या होगा कि इसको सेलेक्ट करना होगा, इसके एक वर्टेक्स पे यहाँ पर आ जाओ और यहीं पर दिखेगा stretch और lengthen का ऑप्शन, so you can simply click on stretch and now it gives you the flexibility to stretch the line अगर बाहर कहीं extend करना है, so you can stretch the line. Okay, next is rotate. सो रोटेट के लिए एक ऐसा फिगर बनाते हैं जिसमें रोटेट होने पे पता चले कि रोटेट हुआ है। सो लेट्स से दिस इज द फिगर। सो इफ आई वांट टू रोटेट दिस, सो यू विल सिंपली क्लिक ऑन द एंटिटी एंड यू विल क्लिक हियर रोटेट एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द पॉइंट अबाउट व्हिच यू वांट टू रोटेट। सो इफ आई वांट टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, आई विल क्लिक हियर, or I can rotate to any angle that I want. I can rotate it by, say for example 180 degrees. So it has rotated by 180 degrees. नेक्स्ट इज द मिरर ऑप्शन। मिरर ऑप्शन के लिए जैसे मेरे को यही एंटिटी, इफ आई वांट टू दिस वन एंटिटी, इफ आई वांट टू मिरर इट, सो यू सिंपली क्लिक ऑन दिस एंटिटी। पहले एंटिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो मॉडिफाइड टूल चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे। सो नाउ आई हैव क्लिक्ड मिरर हियर। और मिरर के लिए हम लोग जैसे सॉलिडवर्क्स में जानते हैं कि मिरर के लिए वी हैव टू स्पेसिफाई आइदर द मिरर प्लेन और द मिरर लाइन, लेकिन AutoCAD में you don't need a mirror line or a mirror plane. You can simply click anywhere you want. So for example, if I want to mirror this, so I'll click here and I'll go straight up. अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है कि if I want to create a mirror image without any deflection, without any rotation, at the moment आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है, I'm not able to pull it straight up. इसमें एक एंगल एसोसिएटेड है, तो इस एंगल की वजह से there is a distortion in the mirrored image. अगर मुझे चाहिए कि I am able to draw only horizontal and vertical lines, then you have to press F8 on the keyboard. यदि मैं F8 दबा दूंगा, so now you see that there is no rotation associated with this line. It's either it is horizontal or it's vertical. There is nothing in between. There is no angle in between. So if I click F8 on the keyboard, I can draw only horizontal and vertical lines. So F8 दबाने के बाद I'll simply click here and press enter. You will have mirrored these two entities. ठीक है? Again, if I want to mirror, select both the entities, glue to mirror. Which is so if you want to mirror, where do you want to mirror? So I'll first click here, then click here, and press enter. So now you will see you have the mirror copy here in the bottom part. Okay. तो ये सब मिरर हो गए। नेक्स्ट इज द ट्रिम ऑप्शन। ट्रिम ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आई विल से, तो इसको ध्यान से देखने का, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। ट्रिम के लिए सॉलिडवर्क्स इट्स वेरी इजी। ट्रिम के लिए ट्रिम ऑप्शन सेलेक्ट किया और क्लिक ऑन द लाइंस दैट यू वांट टू सेलेक्ट, पावर ट्रिम ऑप्शन AutoCAD में। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इफ आई क्लिक ऑन द ट्रिम ऑप्शन, इट इज फर्स्ट आस्किंग मी to select the object about which the trim has to be made. So for example, यहाँ एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कई सारे लाइंस घुसे हुए हैं। So you have the arc line which is coming inside this circle. You have this arc, इसका भी some part is coming inside the circle. और ये रेक्टेंगल जो ओरिजिनल रेक्टेंगल बनाया था, इसका भी कुछ एज का कुछ हिस्सा इस सर्कल के अंदर आ रहा है। Now I want to clear everything inside the circle. So what to do? You come here, you click on the trim option, select this circle, then right click. Once you have selected the reference that this is where you will start the trimming from. So this will be the reference entity. Once you have clicked that, then you right click. After right clicking, you select these entities. ये गया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया। तो जो सर्किल के अंदर जितने भी लाइंस आ रहे थे, now we have trimmed them out. अब सर्किल के अंदर कुछ भी है नहीं।
एक बार और दिखा देता हूं. सो यू क्लिक ऑन द ट्रिम ऑप्शन, सेलेक्ट द सर्कल, राइट क्लिक. पहला आपको ये बताना है कि किसके रेफरेंस में ट्रिम हो रहा है. सो सर्किल के रेफरेंस में ट्रिम हो रहा है. उसके बाद राइट क्लिक करना है और फिर उन एंटिटीज पे क्लिक करना है जो कि ट्रिम होने हैं. सिमिलरली वंस मोर, सो आई कैन क्लिक हियर, देन राइट क्लिक, देन यू कैन क्लिक हियर. एक यहां पर दिखा देता हूं. सो फॉर एग्जांपल एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं. सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू trim with reference to this line, so I can click on this line, then right click, and then I can either click here, so that will trim these two, or what I can do is I can draw the same diagram, go to trim, select this reference line, I can click on these areas. So this part of the curve is going to be getting trimmed. Okay. So ये trim option था. Fillet option is very straightforward. यहाँ पे fillet पे आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप command line पे आ जाइए. Command line पे it is showing you the radius option. What should be the radius of the fillet? So you click on the radius and you enter the radius. Say for example 5 दे देते हैं. So once you have done that, you select the first entity, you select the second entity, and you will see that it has applied a radius, fillet of radius 5. अगर मुझे यही टूल को रिपीट करना है, सिंपली प्रेस एंटर. तो जो लास्ट सेलेक्टेड टूल था, इट विल बिकम एक्टिव. क्लिक हियर एंड यू विल सी द रेडियस, a fillet of radius 5 has been applied. Next option is array. So array option, again, it's very powerful in AutoCAD. So for example, if I have a circle here, I want to array this circle. So what I will do is I'll select the circle, come here. array के साथ में देखना, ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है. हर ऑप्शंस के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू है. इट विल गिव यू फर्दर एक्सटेंशन ऑफ दोस सिमिलर ऑप्शंस. बट array में it's slightly complicated. So if you click on this and you click on this drop down menu, it gives you 3 ways to array the same entity. So SolidWorks में आप लोग पैटर्न जानते होंगे. So पैटर्न में रेक्टेंगुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, कर्व ड्रिवन पैटर्न्स होते हैं. So similar thing. So first of all, let's look at this rectangular array. So if you click on the rectangular array, it is giving me an array which consists of 1, 2, 3, 4 columns and then 3 rows. I can change it. So for example, the columns, you can see here the columns, I can change this to 10. So now you have 10 columns and 3 rows. I can change the number of rows as well. So for example, I want to change it to 5. So instead of 3, I have 5 rows and 10 columns. इसमें ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 ड्रैग हैंडल यू विल सी. एक ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया. द नेक्स्ट ड्रैग हैंडल इज दिस एंड द लास्ट ड्रैग हैंडल इज दिस. ये फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट, ये आपका पहला ड्रैग हैंडल और ये दूसरा ड्रैग हैंडल. पहले ड्रैग हैंडल को यदि हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तो द स्पेसिंग बिटवीन द 2 कॉलम्स इज गोइंग टू चेंज. सो फॉर एग्जांपल, I'll come to this first drag handle. I'll click here, and if I move inside, you will see the spacing between the entities is going to change, and I can click anywhere that I want. अगर मैं दूसरे drag handle को select करूं, and if I move this, then the number of entities, so the number of rows will increase. So if I move outside, you will see. Let's first click it, and let's move outside. So you'll see that the number of entities are increasing, the number of columns are increasing. So that's the point of these 2 drag handles. You can do the same thing in the rows as well. So pehla drag handle, you will come here, click on it, and if you move it, it's difficult to click on it, and if you move it, you will see that the spacing is going to change. And if you click on the last drag handle and if you move it, you will see that the number of entities will increase. Obviously, अगर आपको बहुत प्रिसाइज होना है तो आप क्या कर सकते हैं कि you will simply come here, you will see this option between. So between में आपको spacing दिखा रहा है कि columns के बीच की spacing कितनी है. It's 21. You can simply move this to, so for example, मैं 30 टाइप कर देता हूँ. So you'll see that precisely the distance between the 2 columns is 30. Similar thing goes for the rows as well. So अगर यहाँ पे 17 था, मैं इसको 20 कर दूंगा तो रोज के बीच की स्पेसिंग भी चेंज हो जाएगी. एनीवेज, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर पैटर्न. नेक्स्ट पैटर्न जो है
इट्स कॉल्ड पोलर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न। इसके लिए मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर कोई एंटिटी है, जैसे यहाँ पे एक एंटिटी है इस तरह की, एंड नाउ यू वांट टू पैटर्न दिस। सो व्हाट यू डू इज यू फर्स्ट सेलेक्ट दिस एंटिटी व्हिच हैज टू बी पैटर्न, देन यू कम हियर एंड यू क्लिक ऑन पोलर array. Once you click on the polar array, you have to click on the center of this larger circle. So once I do that, you will see that the number of items is 6 and it has arrayed across the periphery of the outer circle. अगर मेरे को number of entities change करनी है तो I'll simply come here and I'll type, let's say 15. So now you have the 15 circles. इसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें भी एक rows का option है. So if you change the value of these rows, so for example if I increase this, so जो पैटर्न ये हुआ है ये रेडियल डायरेक्शन में पैटर्न हुआ है. So instead of going in the circular direction, और I think azimuthal जो है इसका करेक्ट नाम होगा, but instead of going in this circular direction, it has patterned radially outwards. एक चीज और जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है लेवल्स. यदि मैं लेवल्स को 5 कर दूं तो आप देखोगे कि कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन यदि if I close the array and if I change the perspective, so it's showing a 2D image. If I shift from 2D to 3D, I can do that by clicking here. You see this home option? यहाँ पे ये WCS का home option दिख रहा है. If I click here, so the perspective changes from 2D to 3D, and now you can see that there are 5 of these circles in the Z direction, in the Z direction. Okay, so that's what the level thing does. Okay, let's go back to 2D. And let's delete all this. Last option is the path array. So for example, if I come here, if I have a circle, let's do big circle. Or other similar thing, if you want to undo anything, you have the Control Z option. So if I have a circle and if I have a path, let's take a very complicated path. By you can use a spline. Okay. So I have a path here. So if I want to array this circle along this path, so what you will do is you will select this, come to array, path array, and then you will select the path. So once you have selected the path, you will see that the circle is getting patterned across the path. इसमें एक चीज देख सकते हैं कि ये जो नया डायलॉग बॉक्स खुलता है, हर बार खुलेगा जब आप पैटर्न करोगे या array करोगे, तो it will take you to a different tab. The name of the tab is array creation. So इसके साथ जो options associated with the array, it will come here. इस केस में you can see that the items, number of items or the number of circles is locked. ये 9 है, I cannot change it. It's not active. To make it active, however, this is active. That means the distance between the two arrays I can change. I can make it, for example, 15. This I can do, but the number of items is locked. If I want to enter the number of items, what I have to do is I have to come here to this measure option, click, and then select this divide. Now you can see that the item option is on. So now I can just click here and I can make, for example, 5. So now you have 5 entities here. So that's the path array. तो ये सारे tools हो गए. एक offset tool और है. So let's look at the offset tool as well. So एक ही rectangle मैंने बना लिया है. If I want to offset this, so I'll select this and then I'll go to this offset. Offset में ये आपको पूछ रहा है कि what is the offset distance. So you enter the offset distance. So for example, I enter 5 here. 5 enter करने के बाद में अगर मैं ये original जो highlighted blue में highlighted जो rectangle है, this is the original rectangle. If I go outside, if I move my cursor outside, so the offset is going to be on the outside. If I move my cursor inside, then the offset is going to be on the inside. So I can do this, press enter, or if I want to repeat the same command, I'll press enter. We just first select, then repeat the command, and then I can, let me first do this offset, enter 5, and then I can do a offset inside also. So this is the inside offset, and then this is the outside offset. तो ये तो सारे tools हो गए. एक layer का tool और आप देख लीजिए. So for example, if I have a circle here, rectangle here, rectangle में मान लीजिए मुझे dimension करना है इस rectangle को. So you come here to the annotations tab और यहाँ पे आप linear select करिए. You select the first endpoint, the second endpoint, very similar to smart dimensions. So it is showing you the dimensions of this rectangle.
Again, if I come to the dimensions tool, so this is showing you the dimensions of this rectangle. You can even do an angular dimension. So you click here, you this drop down menu, you select the angular dimension, you select the first entity and select the second entity, and you have the angle between the two. Layers option अब आप देख लीजिए कि मान लीजिए ऐसा मेरे पास कोई इमेज है जिसमें I want the image in such a way that कि एक base entity है, I don't want to make any changes to the base entity, या फिर एक drawing का कुछ ऐसा हिस्सा है that I want to plot, or maybe I want to make some modification in certain areas of the drawing by without making any changes in the other areas of the drawing. So what you can do is you can layer your drawing. तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो dimensions हैं, I am not sure whether these dimensions should be plotted or not. मुझे नहीं चाहिए कि कभी मुझे चाहिए कि dimensions के साथ I want this image, sometimes I want it without. So in such cases, what I will suggest is that you create layers. So to create a layer, you first come here, that shows the layers property options. You click here, and now it is showing you all the layers that there are. So in order to create, so 0th layer and the definition point, these are by default. If you want to create a new layer, you click this option, this little option here, and then you can write, for example, the name of this option will be dimensions. Dimensions. और यहाँ पर आप देख सकते हैं you can associate a color with this layer. So for example, if I associate red color with this layer and I click OK, and then you can close this layers tab. Now what you can do is you can simply click on these dimensions and you can move these dimensions to a different layer. मैं यहाँ पे जो dimensions layer मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे इनको move कर दूँगा. तो आप देखिए मैंने क्योंकि यहाँ पे red color associate किया था इस dimensions layers के साथ, so you will see that the color has changed to red. Now if I don't want to visualize this dimensions, what I will do is I'll select, come here, और यहाँ पे एक light bulb type का option आपको दिख रहा है. You can turn this off. In this case, the dimensions, the layer dimension has been turned off. If I want to see it again, you can come here and you can again turn it back on. So that's how you can toggle between dimensions on or dimensions off. If you have a schematic and if you want to toggle between some of the features of the dimension schematic should be on or some of the features should be off. So you can layer it, and if you want to again, if you want to make certain changes in one layer without affecting the next layer, without affecting the other part of the drawing, then you can layer your images. Okay. तो इसको delete करके एक मैं example दे देता हूँ powder bed से. For example, I want to draw a schematic of the powder bed fusion. So how to do that? So let's first quickly start with the rectangular tool. This is the first rectangle. I'll simply hit Control, or maybe I'll go here. I'll click on the copy option. This is the point that I want to move, and I'll move it here. Then अच्छा एक चीज और जो कि important है वो ये है snapping options. जैसे if I have a line here, if I have a line here. सुमित सब दिख रहा है ना, क्लियर है ना? हाँ भैया सब क्लियर है. तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, मुझे लगा कि मैं बोलते जा रहा हूँ. ओके, सो ये लाइन है. हाँ सुमित, एक बार ना लेयर्स का वो बता देना, जैसे लेयर लॉक हो जाती है एंड हिडन हो जाती है ना. लेयर लॉक एंड लेयर हिडन. हाँ मतलब जैसे ठीक है, मैं बता दूंगा. मैं एक बार ये स्कीमेटिक एक बार एक्सप्लेन करने के बाद दोबारा लेयर्स को बता दूंगा. हाँ तो मतलब क्लियर तो कर दिया आपने, लेकिन बस वो मतलब जो बटन है ना वो बल्ब एंड होल वाले, बस वो बता. अच्छा, एक बार और मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो एक बार ये स्कीमेटिक देख लो, उसके बाद फिर मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा उसको. हाँ पहले स्कीमेटिक. जैसे ये, हाँ तो ये जैसे ये लाइन है, मान लो ये लाइन है. मैं जैसे बता रहा था कि स्नैपिंग ऑप्शंस स्नैप कैसे होते हैं. जैसे यहाँ पे एक लाइन है, आई कैन क्लिक ऑन दिस लाइन अगेन, एंड नाउ यू आर सीइंग दैट इट इज गोइंग टू स्नैप टू इट्स एंड. इट कैन स्नैप टू इट्स अदर एंड, or it can snap to its midpoint. ठीक है, मतलब it's accurately picking up its endpoints and the midpoints. Also, it is going to pick up the vertical. So for example, आप ये green dotted line देख सकते हो. Green dotted line. Yeah, you can zooming it makes it. So you can see the green dotted line, and it is snapping to this green dotted line. So you see that these are the snapping options.
if you want to change the snapping option, so for example, if you want to change the snapping options, you can come here to this O snap option, object snap, and you can click this drop down menu, and now you can change it. So for example, as I said, it is snapping to the endpoints, midpoint, it will snap to the center of the circle, intersection and extension. So for example, if you want to snap to the tangent of a circle, so I'll check this option. Now if I draw a circle and if I draw a line here, and if I move closer to this circle, you see this green tangent thing, it is coming. So now it is snapping to the tangent of the circle as well. So these snapping options are very important to draw very accurate curves. Anyway, so you can, there are lots of options and you can select. Sometimes this snapping option, it gets very annoying. It wants to snap where you don't want it to snap. In that case, you simply turn all these options off. So you can, or you smartly select the snapping options where you do want the object to snap. So let's turn this tangent option off. Okay. So let's simply draw the powder bed fusion schematic. So मैंने start किया कि भैया 2 rectangle ले लिए और 2 rectangle ले लिए और let's connect them using a line. और एक और rectangle ले लेते हैं. Let's Control C, Control V, and we'll select this. Select the move option, and you snap it to the center of this line. Delete this line. So schematic में मैं ये चाह रहा हूँ कि you have this area, which is the powder reservoir, जहाँ पे powder bed fusion में आप लोग को मालूम है कि एक powder reservoir होता है और एक print bed होगा. तो मैं सोच रहा हूँ कि ये area जो है, this will be the print bed, and this will be the powder reservoir kind of a thing. So now I want to draw, say for example, pistons. So जो powder को push करते हैं upward. So let's draw some kind of a piston here. So again, we'll select this. Say fade. Mirror this, that, use an arc to connect these two. Okay, so this is a kind of a piston. So now you'll select this and just simply mirror it to get to the other end as well. So you see here, oh, if you press escape in the middle of an operation, it will simply exit out of the operation. So you'll first do this, then press enter. So यहाँ पे 2 piston आ गए, maybe we'll make it non-symmetric. So we'll move this piston down. If you want to move an entity, precisely if you want to move an entity, you can use the control and the arrow keys. So this piston, say for example, it's moving up, this piston is moving down. और यहाँ पे let's make a print, मान ले इस तरह का part जो है, it's getting fabricated. ये इस तरह का part जो है fabricate हो रहा है. Okay. इस तरह का part fabricate हो रहा है. और मान लो I want to show the layers as well. So what I will do is I'll create a line. So for example, I've created a line and I will simply go and I'll pattern this line. I want only one column. So I'll enter one column here. अच्छा इस हैंडल से को, so for example यहाँ पर जो है ये जो layers जो line है, it is extending in the wrong direction. I want to flip it. So you can simply come and you will press this first drag handle and then you can shift this. So from it was going on the top earlier, but now it's going towards the bottom. So I'll shift this and then I'll select the second drag handle, and if I can, okay. Now you see it's kind of representing the layer by layer operation. So you see these are the many layers of a powder bed fusion. Now you see what I want to do is I want to trim the lines which are extending outside this part. लेकिन because I used the array command, I cannot do it. क्यों? क्योंकि every line is actually a block. मतलब अगर मैं select करूंगा तो पूरा block ही select होगा. और अगर पूरा block select हो गया, so I cannot trim each entities at a time. So what I have to do is I have to first select this and give the command which is called as explode. So EXPLODE, explode. Once you give the explode command, you will see that every entity is now separate. Lekin you have to use it very cautiously, because once you explode this, there is no way to regroup it. So now what you can do is you can just come to trim, select this first line and trim all the lines which are extending. Again, you can come here and you can trim all these lines.
Again, you can come here, select this, trim all these lines, and perhaps you can do the same over on the other side. Select this, and then trim all these lines. Okay. So yeah, it's representative of multiple layers. So the printed object is made out of multiple layers. Next, say for example, I want to add some powders. तो powder के लिए I will use the hatch option. Hatch option में आपको एक चीज ध्यान रखनी है. If the area is closed, then only this hatch option will work. So for example, this is an open area. क्यों? क्योंकि ऊपर साइड से खुला हुआ है. So is this. This is an open area. So hatch option will not work in these open areas. So first I have to close it. So I'll click here and I'll close these open areas which is with a line. And once you have used the hatch option, you can simply delete these lines. So now this is the hatch option. You can come here, click on the hatch option. So this is the hatch menu. This is the hatch creation menu. And if you click on this drop down menu, you will see that there is lot of patterns and textures that you can use. इसमें से यदि आप ये air conic, R conic pattern use करेंगे, if you click here and if you click here, actually what is happening is hatch maybe you have multiple entities and you can change the spacing between the number of entities. So to do that, you can click here and you can change the spacing. So at the moment it was set to 1, I can change it to maybe reduce it. So you see that these are the separate entities and the spacing between the separate entities has been changed. Now what's the spacing? It's 0.009 units. If I increase this spacing, you will see that it will become less dense. If I reduce it, you will see it will become more dense. So it can go very dense, you can see. So let's keep it to 0.00, maybe reduce it. Fine. I can simply click here also. And now this is giving the effect of, say, for example, a powder. So I can delete these lines. But before we do that, एक roller भी बना लेते हैं. एक मान लो एक roller बना लेते हैं यहाँ पे. See, now it is snapping to this. This is, so what you can do is you can click off the OSnap option. So now you have made a roller. और मान लो इस roller के आगे मुझे दिखाना है कि it is pushing some powder. So what I will do is I'll take a spline curve and I'll make this kind of a thing. Or I'll again put some powder here also. But maybe because the powder is being pushed, so its density is up on this end. So I'll increase the density. OK. And now I can delete these lines. Not required. Delete these. So now this is giving an effect that, OK, the powder has been taken from the reservoir and it is pushed to the print bed. OK, what else can we do? OK, let's maybe quickly add a laser as well. So we have the this laser unit. And let's add a laser beam. Add this laser beam here. Layer thickness तो पहले layer का तो बहुत ज़्यादा हो गया. Anyways, we can quickly draw this. Let's laser. So you can see now this line is extending beyond. So you can use this trim option. You can trim this. Okay. You can add color also. Same. Go to the hatch. Click on the drop down menu. Instead of selecting these patterns, you can select solid. And then you can color this. Maybe I'll select the red color for the laser. You can select the red color for the laser here. OK, close hatch creation. And I'll color some gray color for this post. So that this is the gray color option I can select here. And I can select a different color for these pistons. Maybe I'll select this kind of a color. And you can even color these separate entities, but you know, it will be better if you first give the hatch option and then you do this, create these layers. Because then what you can do is, because I have to now pick each and every separate regions to color them in. But if you first color the entire part before creating this array that I did, it will be a much better workflow. But nonetheless, you can quickly color all these regions. So it's the same color. Yeah. OK. So now you can see, maybe I'll color the roller as well. Let's take a orange color. We'll take. No.
That doesn't look right. Okay, let's take a yellow color. Okay, and let's color the laser unit as well. Let's color it black. Okay. So now you see this line. Now it's not really required. You can click out of it, and now you can see that this schematic of the powder bed fusion is there. I'll also make a melt pool just to show you one of the hatch features which is very often used. So let's say that this is the substrate, and I'll create a melt pool also. So the shape of the melt pool is double ellipsoidal, right? But I don't know how to create double ellipsoidal option here. Let's make it using this. So again, use the trim option. Select this, delete that, and let's make our substrate a little less. So, oh, the substrate has tilted. I don't want that. I just simply come like this. So now this is the substrate. This part is the diluted area, the substrate melted area, and then you have the crown of the bead. Now, if I want to say, for example, if you look at the melt pool, you will realize that at the center of the melt pool, you have the highest temperature. And if you move towards the substrate, towards the edges, the melt pool starts to get colder. And so, for example, you want to show it using a gradient. So again, you can come here, select the hatch option. And now you see that there are lots of options, and one is the gradient option. So I can click on this gradient option. It is showing me that at the edges, the color will be blue, and at the center, the color will be yellow. I want to change it. So no, I want to change this. OK, so now you see at the center, the color will be red, and at the edges, the color will be at the center, it will be yellow, and at the edges, it will be red. So if I select this, now you can see that now this is giving an effect that, OK, maybe towards the end of the melt pool, it is starting to cool, and we will select a color for the substrate as well. OK. So now you see that this is kind of the melt pool. Again, I can move it closer. Simply select all of this, press Ctrl X and Ctrl V, and you can move it closer. One other thing that I will, I haven't shown you is the line options. So for example, I want to give an effect that this area is actually this area. So this melt pool that you see here, it comes from this part of the drawing. So what you can do is you can make an exaggerated drawing. So what you have done is you have made these two rectangles, connect up these two rectangles. So you can go to this edges, connect here, connect these two rectangles, and it's giving you the effect that this particular area has been zoomed in. OK, I can make these lines as dashed lines. So to do that, you can come to this properties tab and come here. At the moment, there is no dashed line option showing. If you want the dashed line options, you can click on this others tab and then load. Once you click on this load, you will see that there is a host of options. You can select lots and lots of options. There are different types of lines, but the most common ones are these three center lines. Let's click. And now you will see that these options have been loaded into the menu. So now if I select these, and I can go here and I can select this option. Select this. Oh, select this option. Okay, and now you can see that the lines have changed to dashed lines. तो ये powder bed fusion का मेरे ख्याल से एक अच्छा schematic है. Labeling. If you want to label something, say for example, I want to label it. So how can I label this? I can come here to the annotations tab, and then you can click on this leaders option. Click on the leaders option, and you click on the object that you want to label. So for example, I want to label this. I can simply click, and then I can write here. You can type from the keyboard. This is the laser unit. Laser unit. OK. What else? Let's say I'll come and click here, and I'll rename it as ruler. This is the ruler. What else? Let's label this also. This is the part. This is the part. So you can change the labels also. In fact, if you really want the labels to look nice, you can use this option. If you come to the annotations tab and you come to the third option here.
So now you can see that this is the annotations modification. You can see the name of the tab is actually multi-line leader style manager. So you can modify each of these annotations, how they look on the image. So you can click on this modify, and then say, for example, I want to increase the size of the arrow. So I can from 4, I can go to 10. Let's put in 10 here. Click OK, close, and now you see the size of the arrows have increased. One thing that AutoCAD does is it adds these landing areas, these horizontal lines. If you don't want these horizontal lines, again, if you select, you can see that everything is getting selected because it is acting as a block. You have to explode this. So you have to select this, give the command explode. And once you have given the command explode, you will see that now these are separate entities and these are entities which are editable. So I can delete this. I can select and move this closer. Now you get this kind of a schematic and you do lots of things here. I can just quickly turn off the grids option and this is getting a much better result. Agar aapko you want a quick snapshot of this image, you can use snipping tool to hai, lekin if you want a slightly better resolution image, what you can do is you can give the command JPEG out, JPEG out, JPG out. So you'll select where do you want to place it. Let's call it EPF and save it. And you will first select all of this and then press enter. So now actually it will save the file and you can go to the desktop and you can come here and open this. You can come this and it has saved as a JPEG. If you want it in a PDF format, then what you can do is you can come here. You can click on this export options, go to PDF. Not this option. You can come here, go to print, then you go to plot. Then you see that there is lots of options here. You can please make sure that the four options, which are the top 4 options, they are checked. Keep it to landscape. And then you can come here and you can select this option, DWG to PDF. Click here. And now what to plot? If you look at the plot area, it is asking you what to plot. From here, you can simply select this window option. And now whatever is going to be inside the window, it's going to plot. So I'll select this and I'll simply click OK. Let's give it a folder. So, let's give it a name. EB AutoCAD Fusion schematic and then save. So your printing or publishing job is in processing in the background, so it will take some time to generate a PDF file, but that's about it. और कुछ इसमें जानना हो तो बताओ. एक चीज और मैं बता देता हूँ. एक चीज और मैं जल्दी बता देता हूँ कि अगर SolidWorks की यदि मान लो मेरे पास ये एक SolidWorks का पार्ट है. यहाँ पे 2 शीट्स हैं और दोनों को रिवेट किया हुआ है और ऐसे कोई ड्राइंग है मेरे पास और और मैंने इसको ड्राफ्टिंग विंडो में खोल रखा है. मान लो दिस इज द ड्राफ्टेड पार्ट. इसको भी ओपन कर लेता हूँ. इस तरह का ड्राफ्ट है मेरे पास और मुझे इसको इंपोर्ट करना है AutoCAD में. हाँ, सिर्फ AutoCAD की स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, बस वही शेयर हो रहा है कंटेंट. कौन सा शेयर हो रहा है? AutoCAD स्क्रीन नहीं दिख रहा? हाँ, AutoCAD की नहीं दिख रहा है, बस बाकी सब जो आप ओपन कर रहे हैं होम स्क्रीन पे वगैरह वो कुछ नहीं दिख रहा. भैया स्क्रीन अपनी, हाँ स्क्रीन शेयर करो भैया अपनी, तो जो आप काम कर रहे हो दिख. एक बार इसको ऑफ करके एक सेकंड. इसमें दिख रहा है? आप दिख रहा है क्या? अब एक मिनट, अभी कुछ नहीं आया. कुछ भी नहीं आ रहा भैया. अब स्क्रीन शेयर करना और उसके बाद जाके स्क्रीन शेयर नहीं होती ना, कंटेंट शेयर ही होता है. नहीं, एक मिनट रुको ना, मैं जैसे डेस्कटॉप आ रहा है. शेयर हुआ. एक मिनट देखते हैं. अभी हाँ, अब आया. हाँ भैया आ रही है ना. तो ये तो कॉमन जो मैं बता रहा था कि जो AutoCAD वाला चीज तो देख लिया ना. हाँ हाँ भैया. अच्छा, ये SolidWorks वाला है.
हाँ, तो सॉलिड वर्क्स का मैं ये बता रहा था कि ये मान लो ये दो शीट्स हैं, शीट मेटल है और ये रिवेट है, ठीक है। ये यहाँ तक तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सॉलिड वर्क्स का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला पार्ट है कि ये सॉलिड वर्क्स एनवायरनमेंट में इसको ड्रॉ किया और फिर उसके जो ड्राफ्टिंग एनवायरनमेंट में इसको ड्राफ्ट कर दिया, उसका जो ड्राइंग एनवायरनमेंट है। इसको मैंने मान लो सेव एज कर दिया PDF। I'll go here and I'll save this as PDF. I'll save this as PDF. ठीक है, हाँ, तो ये मान लो ये मेरे पास एक PDF है, आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट इट इन AutoCAD। सो कैसे करना होगा कि ये मेरे पास AutoCAD था, so what I will do is I'll come to the Applications tab, I'll click on Import and I'll click on PDF. Then it is asking for where the file is that you want to import. In the command window you can click here and then you look in the desktop and you select this and you click open. एक जो चीज है ये बोल रहा है कि PDF scale. The PDF scale is actually set to 25.4 times 1. So it is scaling the PDF down by about 25. I don't want that. I want to import 1:1. So what you can do is in the scale tab you simply put this value 25.4 और यहाँ पे click OK. So once you do that, let's turn this grid on. You can see that the same file has been imported here. ठीक है? Oh, now you can just simply select this, all these title box and the borders. You can delete these. You can delete this, and you will simply be left with this object. So इसका benefit ये है कि मान लो SolidWorks में कोई ऐसा drawing है which needs coloring. So what you can do is you can first draw it in the SolidWorks environment, convert it to PDF, and then import the PDF in the AutoCAD. तो अगर PDF आपने AutoCAD में import कर लिया, so now you have all the usual options. So if you want to color it, so any color that you want, maybe this color, or even if you want to add some texture, so for example some hatch patterns you want, some hatch patterns you want like that, so you can do that as well. Or maybe if you want to add some gradients in the rivets, which is very uncommon, you can add this, right? So you can do n number of things once you have imported it into the AutoCAD environment. ठीक है, तो ये एक इंपोर्ट का मुझे बताना था। एक चीज और मैं जल्दी से बताना चाह रहा हूँ कि मान लो मेरे पास कोई इमेज है, मेरे पास हाँ ये इमेज, मान लो मेरे पास ये नी इमेज है, मुझे इस इमेज को ट्रेस करना है। सो हाउ डू यू डू दैट? तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यू कैन सेलेक्ट दिस इमेज, सिंपली हिट Ctrl+C, कम टू AutoCAD and hit Ctrl+V and hit enter. Okay. Now you have seen you see that the image has been imported inside the AutoCAD, and I can simply reduce it. और करना ये है कि you have to select this image and you come to this properties tab and you increase the transparency. So now if you increase the transparency, you'll see that the image has gone transparent. Now what you can do is you can use the Bezier or the B-spline curve and you can trace over this. For example, I can trace over this knee part. Okay. And the fewer clicks you use, the better control you will have. Okay, and let me pick up the knee spline tool here. Okay, and you can really take your time with it and you can do a very good job of tracing this image. So if you have a very complex shape that you have downloaded from Netsa or somewhere, and if you want to trace it, you can use this this option. Again, I'm not doing a very great job, but you can take your time. And once you have traced it, you can click on this underlying image and you can delete it. And now, oh, this looks horrible. We'll trim this. Let's trim this. Okay. Now you can use the usual options of AutoCAD to maybe if you want to color this in. So yeah, you can color this. So yeah, image tracing, it's very useful sometimes. तो ये तो हो गया भाई AutoCAD. इन केस कुछ पूछना हो, कुछ स्पेसिफिक चीज तो बोलो, एनी डाउट? जैसे भी एक कर्व देना हो, जैसे अगर गॉसियन प्रोफाइल बनानी हो और हमें उस प्लेन की इक्वेशन पता हो, तो इक्वेशन शेप बनता है कि हमें खुद ही करना पड़ेगा? इसमें एक मैक्रो का ऑप्शंस है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, मतलब API है इसके अंदर AutoCAD के अंदर, बट आई एम नॉट श्योर कि यू कैन प्लॉट दोस काइंड ऑफ थिंग्स.
मुझे भी चेक करना पड़ेगा सुमित, आई एम नॉट श्योर। नहीं वैसे तो ये ट्रेस वाला ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट पहले से कर रखे हैं, तो उससे तो हो जाएगा, बट जनरल केस चलो देख मैंने यार सिविल इंजीनियरिंग वाले ना इसमें एलिवेशंस प्लॉट करते हैं, सो वो जो सर्वेइंग करते हैं हाँ तो दे हैव अ स्केल, मतलब एक स्केल रहता है और कहाँ पे कितना एलिवेशन है उसको प्लॉट करते हैं ऑटोकैड में, सो मे बी दैट इज पॉसिबल, बट we'll have to check the documentation, AutoCAD documentation. चलो नेट पे सर्च कर लेंगे उसको एक बार। हाँ हाँ हाँ, और इसका मैक्रो भी है, मैक्रो का मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, मतलब वही जो सॉलिडवर्क्स में है कि एक चीज बार बार रिपीट हो रही है तो यू कैन राइट अ मैक्रो फॉर इट एंड इट विल ऑटोमेट द टास्क एज वेल, है ना? हाँ मैक्रो तो पीछे उसमें भी चलता है ना ये। हाँ 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 ऑटो। अच्छा, पूरा बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी, मान लो अगर तुम्हारा कोई स्केच है यहाँ पे, मान लो कोई स्केच है, so for example this is a square, let's make it slightly complicated, let's pattern it, okay, let's pattern this square, okay. तो मान लो ये एक ये इमेज है और I want to import it in SolidWorks, मतलब मतलब उल्टा करना है, तो what I can do is I can come over here and I can save as, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ना इसका जो DXF फॉर्मेट है, इफ यू क्लिक हियर एंड यू विल सी दिस DXF फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देना, already there, replace it, okay. So now you have this DXF format. अगर आप SolidWorks environment में आ जाओ, इसको बंद करके आप इसका DXF फाइल अगर खोलना चाहो, so you can open that. So you click here और वो DXF फाइल ये रही, click and will open, or you can import it as SolidWorks sketch. Yes. So you see now it has imported as SolidWorks sketch. तो ये पूरा backwards compatibility you will have, और आप इसको जो normal SolidWorks operation है वो आप इसको कर सकते हो, can extrude anything, ठीक है? So if you create a very complex drawing in the AutoCAD, you want to import it and you want to convert it to 3D, so you can do that, ठीक है? तो ये तो हो गया भाई AutoCAD, lots of options, मैंने बहुत तेजी से बताया, but lots of options I'm sure, और तुम लोग खुद एक्सप्लोर करोगे you'll find lots more, है ना? और उसका एक PDF ये अभी देखो, अभी जाके वो PDF रेंडर हुआ है, so this is the PDF, so very crisp images you will get, high quality जो SVG files और PDFs में जो कि बहुत common है, so you'll get very high quality images. मतलब हमारे को फिर इशू नहीं पड़ेगा, जो जर्नल के लिए चाहिए वैसा रेजोल्यूशन आ जाता है इसमें ऑटोमेटिकली। जर्नल के लिए चाहिए तो ये PDF तो जर्नल्स नहीं मांगते हैं, वो लोग TIFF फॉर्मेट मांगते हैं जनरली, जितने भी बड़े जर्नल्स मैंने देखे। तो उसके लिए क्या करना ना, अगर फोटोशॉप है तो बहुत बेस्ट भी फोटो जाना, यू कैन इंपोर्ट दिस, ओपन, और यू कैन सिंपली क्लिक, कौन सा था, ये था शायद, ओपन, और यहाँ पे रेजोल्यूशन पूछ रहा है, व्हाट इज द रेजोल्यूशन, सो आई हैव टाइप्ड हियर 600, आई कैन टाइप हियर 800 एंड क्लिक ओके, ठीक है? और फिर इसको क्रॉप कर लेना, और फोटोशॉप तो फिर अपने आप में इट्स अ हेफ्टी सॉफ्टवेयर, एंड उसका तो मेरे को ज्यादा आइडिया भी नहीं है, बट यू कैन क्रॉप इट, और ये जो पीछे का जो चेकर बोर्ड पैटर्न है, यू कैन रिमूव इट बाय क्लिकिंग ऑन द फ्लैटन इमेज। सो नाउ यू सी ये हो गया। अब आप यू कैन सेव इट, से फॉर एग्जांपल सेव ऑन योर कंप्यूटर, और यू कैन सेव इट इन टिफ फॉर्मेट। यहाँ टिफ पे गए, डेस्कटॉप पे मैं इसको रख देता हूँ, ओके। Now we'll go to desktop and you see this image. This is the TIFF image. खुल गया, ये TIFF image है, again high resolution. So if I check the properties and if I go to the details, very high resolution, so 800 dpi. तो अगर लाइन ग्राफ्स वगैरह के लिए मेरे ख्याल से it is 1200 dpi, but for simple schematics around 600 to 800 dpi is asked. Okay. तो ये डायग्राम्स के लिए कम है, ग्राफ्स के लिए ज्यादा है। ग्राफ्स और लाइन कर्व्स, यदि कोई स्केच वगैरह है तो उसके लिए भी 1200 dpi के आसपास। जहां तक मैंने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का देखा था, तो उसका तो यही स्कीमेटिक है कि लाइन ग्राफ्स के लिए 1200 dpi, और जो स्कीमेटिक्स हैं उनके लिए 600 to 800 dpi। और फॉर्मेट कौन सा मतलब प्रेफर कर रहे हैं? टिफ TIFF, इसको शायद इसका क्या फुल फॉर्म है, टैग इमेज फाइल, टिफ बोलते हैं इसको, जनरली टिफ फाइल फॉर्मेट ही मांगता है। तो भैया ये बस फोटोशॉप यूज करके मतलब अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑटोकैड से ये रेजोल्यूशन नहीं मिलेगी हमें? नहीं, डायरेक्ट ऑटोकैड से जो JPEG आउट एक कमांड बताया था, उससे बहुत कम रेजोल्यूशन मिलता है।
मिलता है, फिर भी मेरे ख्याल से 300 dpi तक इट विल प्रोड्यूस द इमेज, लेकिन जो रिक्वायर्ड है से 800 dpi इज नॉट जनरली, AutoCAD कैन नॉट गिव यू दैट। तो मतलब पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करो देन। हाँ, उसमें मेरे ख्याल से इंकस्केप में शायद कुछ ऑप्शन है, बट आई एम नॉट श्योर कि उसमें पीडीएफ को इंपोर्ट करके फिर सेव एज में जाके हाई क्वालिटी प्रिंट सेव कर सकते हैं, बट आई एम अगेन नॉट श्योर अबाउट दैट। उतना तो इसमें फोटोशॉप में भी लग ही जाएगा। हाँ, फोटोशॉप तो मैंने बताया कि मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। इमेज इंपोर्ट किया, रेजोल्यूशन सेट किया, फ्लैटन लेयर, जैसे यहाँ पे लेयर था तो यहाँ पे सिलेक्ट करना था फ्लैटन इमेज और सेव एज, बस, और कुछ नहीं करना। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मे बी यू कैन चेंज द ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, ठीक। मैटलैब देख लो भाई फटाफट। तो ये पहले का ये जो कोड है, तो कोड के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे एक मिनट मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ। एक ये एक्सेल फाइल है, दिस इज अ सिंपल एक्सेल फाइल। इसमें कुछ डेटा सेट है, कुछ रैंडम डेटा एक्स एंड वाई वैल्यूज हैं, और यहाँ पे मैटलैब खुला हुआ है। सो व्हाट यू हैव हियर इज, दिस इज अ वेरी स्मॉल, मतलब ये वाला पार्ट इट्स इम्पोर्टेंट वेयर यू आर एडजस्टिंग द fonts and the font weight and so on. So पहला जो है, I have created a variable called dataset. It is reading from the matplot3. This is the name of the Excel file, and you use the function xlsread. फिर मैंने क्या किया कि I have created a variable x, and that variable x contains all the rows of the first column, and I have created a variable y which contains all the rows of the second column from this dataset. Okay. और ये डेटा सेट में दिस इज द एक्सेल फाइल matplot3.xlsx, दिस इज द एक्सेल फाइल एंड वी आर रीडिंग फ्रॉम दिस। और यहाँ पर स्टेम इज वन ऑफ द प्लॉट ऑप्शन, सो आई कैन सिंपली प्लॉट यहाँ पे टाइप करके आई कैन रन दिस एंड आई गेट दिस काइंड ऑफ अ प्लॉट। ठीक है, जो पहला जो ऑप्शन था, जो स्टेम ऑप्शन था, इसका भी देख लो कि what this does is you can see that this is going to give me these stemmed lines, और ये जो सर्कल्स आ रहे हैं, ये जो डिस्क्रीट डेटा सेट, मेरे को एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कहाँ पे ये डिस्क्रीट डेटा सेट्स हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्कैटर प्लॉट। सो यू गिव दिस प्लॉट कमांड, it has a line width of 2, the dashed and the dot line is there, and you give this hold on command, and if you give this scatter plot, then you will get that circles around the discrete data sets, right? This discrete data points. और ये जो सेकंड वाला हिस्सा है, दिस इज द डेकोरेशन प्लॉट डेकोरेशंस। फॉर एग्जांपल आई हैव यूज्ड सेट GCA. GCA स्टैंड्स फॉर, आई थिंक इट इज गेट हैंडल फॉर करंट एक्सेस। तो इसमें एक्स टिक, मतलब जो टिक मार्क्स हैं, एक्स एक्सिस के टिक मार्क्स, तो ये जो टिक मार्क्स हैं, ये जो लेबल्स हैं, ये किस तरह से अपीयर होंगे, दैट इज बीइंग सेट हियर। सो इट विल स्टार्ट विद 0, इट विल गो अप टू 2, and then it will do it in the increments of 0.2. Okay, so it started with 0, went up to 2, and then it got there in the increments of 0.2. Similarly, if you look at the y tick marks, you will see that started with 0, went up to 2.8 to the power e to the power minus 4 because of the data set. So 2.8, 10 to the power minus 4, and then it did it in the steps of 0.4. Okay. The next line is font. If you want to select a different font. ठीक है, तो इस केस में मैंने बताया कि जो फॉन्ट मैंने ये जो है ये सेट किया हुआ है ऑप्टिमा, दिस इज द नेम ऑफ द फॉन्ट, एंड द फॉन्ट साइज इज 14, फॉन्ट वेट इज बोल्ड, एंड द एक्स लेबल इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बिन एरिया, अगेन फॉन्ट साइज इज 16, y label is called recorded average mass, font size is 16, and the title of the plot is particle distribution. So this is the second most important part, which is saving the plot. Saving the plot is TIFF. So you have this print option, you give the print command, you type what is the name of the plot, so for example plot name, and what is the format that you want to save it in. So I have saved it in TIFF, and then this is for the resolution. So it is set to 800 resolution, which is not, so you have to bump it up, you have to go to 1200 resolutions. So if you run this, पहले भी रन कर चुके हैं, if you run this, so you'll see that this is the plot name I have, okay, ये जो plot name का है यहाँ पे इस directory में save हो गया. Let's open this directory and see. Let's open this directory, कहाँ गया? And this is the plot name के नाम से save हुआ, and you will see that it's giving you very crisp images, right? और 800 DPI, it's very crisp. So
एक चीज और मैं बता देता हूँ, मे बी यू आर फेमिलियर विद दिस. मान लो आई विल ओपन, लेट्स ओपन दिस वन. ओके, इस केस में we are reading from an Excel file which is called as step over versus efficiency. So let me open that Excel file as well. So this is the Excel file that we are reading from, and you can see that this is a fairly large data set. And what I'm doing here is, if you go back to the code, I have a variable x which imports all the rows of column 10. So it imports all the rows of column 10 as x, all the rows of column 11 as y, all the rows of column 13 as yt, and then this is cnc as it's the variable's name. Or if you want to plot every single of these axes, these values on a single plot, then I'm sure there are lots of ways to do that. But what I have done is I have first plotted x and y, so this against this, then give the hold on command, then plot the next x against yt, then give the hold on command, and then you plot x against this cnc, that is the next size. And these are the marker size. These are the markers. So you have the square marker, you have the round. If you run this code, you will get this kind of an image. This kind of an image you will get. So you have this markers. So for example, these are square markers. You have this triangular markers, and then you have this circular markers. So that comes from these part of the code. Okay, circular marker. And then you have this marker size. That means what is the size of these. What is the size of these squares and circles and these triangles? और ये जो part है, this is similar to what I showed you here. Is exactly similar. Title of the plot is demo, and again, if you want to save it, now this is in the correct resolution, so it's 1200 dpi, and then I have already explained that this is the name of the file, this is the format of the file, and it will save it in the currently set directory. So if I run it, it must have been saved somewhere. Okay, so internal boundary. If I go to that directory. Let's go to that directory and open this internal boundary. So I think it's a मतलब काफी decent looking plot है. The image quality is also high. एक legends के बारे में और एक चीज है कि you can position the legends. So for example, here you can see the legend. The position of the legend, this location actually marks the position of the legend. I can move this legend. So for example, I can type northwest. So I think it will change the position. Let's run it and see. Okay, so you can see that the position has been changed, and I would suggest to leave it. Don't change the position of this legend, because it's very difficult to see where it is going to place it. So you just simply leave it to best. And I think MATLAB is smart enough to know that the legend should be placed somewhere where it does not messes with the plot. So if it shouldn't interfere with the plot lines. So you just leave it to this best option here, and you will get. I think with this, it took a lot of trial and error, but I think if you, अगर ये जो X और Y tick marks है, if you arrange it properly. And if you use this, maybe you have to change the Courier New, which is the name of the font, and you have to select based on whatever the journal wants you to. You will get very decent size plot using this script. So maybe I'll share the script. Sumit, सही रहेगा. And you can play around with this. And जो भी वो बता रहे थे, जैसे अलग-अलग font रखने हैं. हाँ. तो अलग-अलग font नहीं समझा. अलग फॉन्ट रखने थे ना, लाइक टाइटल एंड उसके लिए. हाँ, टाइटल एंड उसके लिए. ओके, जैसे सैरिफ और सैन सेरिफ, मतलब इस प्लॉट के अंदर जितने भी लेबल्स हैं, दे विल बी ऑफ द सेम कैटेगरी. ओके, मतलब प्लॉट यूज कर रहे हो तो सब में एक ही स्टाइल रहेगा, एक ही कैटेगरी, एक ही स्टाइल रहेगा. और वो कौन सा रहेगा? मान लो अगर उसमें लिखा है कि सैन सेरिफ है, तो प्लॉट के अंदर जितने भी लेबल्स हैं वो सैन सेरिफ रहेंगे. और वो फिर बोलेगा कि जो कैप्शन देना है, मान लो इस इमेज कैप्शन देना है, फिगर समथिंग समथिंग showing you the variation of deposition efficiency versus step over. So this is the caption. What should be the font of the caption? So maybe that could be different from what is the label. ठीक है? कैप्शन तो हम पीडीएफ में देंगे ना, कि इसमें भी दे सकते हैं कैप्शन? इसमें तो नहीं दे सकते. उसमें जो वर्ड फाइल में जो टेबल बनाते हैं ना, उसमें जो कैप्शन लिखते हैं, हाँ, वो फिर हमें उसमें देना पड़ेगा ना. हाँ, करेक्ट. यस. सो sans serif, राइट.
हाँ ये शायद इसका डिफरेंस है, अगेन नॉट श्योर। जैसे आप देख रहे हो जो S है या जो ये R है, you see that there is no horizontal stroke in these lettering, right? If I search for serif fonts, maybe you'll see the difference. Serif fonts, Google fonts. Okay, let's look at some serif fonts. Okay, so these are some serif fonts, and then you can see that this horizontal line, you can see this horizontal line at the end of this A and L. I think this is the difference between a serif and a sans serif font. Again, not sure, but अभी तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यही difference है. And if you know, this is a category of font. This is not a single font. ऐसा नहीं है कि serif font is like Times New Roman or a Cambria or Arial. It's a category of fonts, and you can choose any of the fonts based on what is the category that is demanded. ठीक है, तो I think काफी है AutoCAD, you can practice. और actually I must say that मैं खुद I'm new to this MATLAB plotting, so I will share you the codes. But if you come up with something new, कुछ खुद से कुछ अच्छा निकल के आता है, if you figure out something that makes the plot even better, then please do share with me.